Welcome back to my YouTube channel Learn Information Technology. Today in this video we will learn about Home tab. I have already told you many groups of Home tab like Clipboard, Font, Paragraph, Styles and Editing. So in Home tab there are 5 groups. See, Clipboard, this is the first group. Second is Font group. Third, Paragraph. Next, Styles, and the last fifth one is Editing. So there are 5 groups are available in the Home tab. See, this is the Home tab. So let's move further towards the Clipboard group. So in the Clipboard group you will see there are 4 command present over there. First one is cut, copy, paste and format painter. As the name specifies cut, it means remove the text from where it is. If we want to paste this text from any other location, we use paste command. If we talk about copy, as the name specifies, we can generate the copy of any text. हम उस particular text की copy generate करते हैं. After that, we use paste command to paste it to another location. So let's see, first one is cut. Cut basically used for control plus X key. ठीक है, मैं पहले की दिखाती हूँ फिर शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ. Here is the control key and here is the X key. So with the combination of these two key, you can cut any text, any picture, any folder, any document file, anything if you want to cut it. Now, the shortcut trick is, here is the symbol of scissor. Cross sign है or you can say it is the symbol of scissor. It look like a cutting anything. क्रॉस में है, आप इसको सीजर भी बोल सकते हो. और सीजर किस लिए यूज होती है? कट करने के लिए. सो कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज फॉर कटिंग एनी टेक्स्ट और एनी डॉक्यूमेंट, एनी पिक्चर्स एंड यू कैन पेस्ट इट वेयर यू वांट टू कट इट. सो कट, कॉपी, पेस्ट का मैं आपको तीनों साथ में इसका प्रैक्टिकल बताऊंगी. सो लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द कॉपी. सो हेयर वी यूज कॉपी एज कंट्रोल प्लस सी की. So here is the control key and the C key is present over here. So with the combination of these two key, you can copy any text, any folder, any pictures, whatever you want to it. Okay. So here is the shortcut trick. C is used for copy the text because first letter is C. So here control plus C. Okay. So let's move further towards paste. With the combination of these 3, cut, copy and paste, we will explain practical together. Now, paste is used for basically control plus V. Paste क्यों यूज होता है? आपने कोई भी कट किया है या कॉपी किया है, उसको यदि आपको कहीं जाके स्टिक करना है तो we will use V sign. Let's see where is the control key. Here is the control key and here is the V key. So with the combination of these two key, you can paste the text anywhere in the file or anywhere in the drive. So let's move further towards their practical part. Suppose I want to paste learn information technology at the end of the document. I will select this text and I will press the control plus C key. I am explaining copy text. Okay, मैं control C press कर रही हूँ from the keyboard. Now I will place the cursor in anywhere in the document where I want to paste it. मैं अपना कर्सर वहाँ लेके जा रही हूँ जहाँ मेरे को इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को प्लेस करना है. सपोज इसी के बाद करना है तो आप कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हो फॉर पेस्टिंग मीन्स स्टिकिंग इट. अदरवाइज एंटर की प्रेस करके कर सकते हो. ओके, आई एम प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वी की. सी, मैंने लर्न इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया था, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट मेरा यहाँ आके पेस्ट हो गया. ठीक है. नाउ सी इन द टॉप ऑफ द पेज, वहाँ से वो पर्टिकुलर टेक्स्ट रिमूव नहीं हुआ है because I have select the text copy. मैंने copy select की थी इसकी, वहाँ जाके paste किया है. ठीक है. If I will select this text and I will press control plus X key means I am using cut shortcut key. तो देखो यहाँ से वो पर्टिकुलर टेक्स्ट रिमूव हो गया है. ओके,
if I want to paste it like before the for example, मुझे यहाँ पर लिखना है, I will press the enter key, I will use the paste button. So here it will edit before the for example से learn information technology वहाँ यहाँ आके पेस्ट कर दिया मैंने, तो देखो टॉप से जाके वो पर्टिकुलर टेक्स्ट रिमूव हो गया है. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. So last one is format painter. Format painter is basically used to copy the format of any particular text. Let's see the text clipboard group. इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में मैंने पर्टिकुलर हाईलाइट करा है कलर येलो कलर से, टेक्स्ट का कलर मैंने सेट करा है रेड कलर, प्लस इसका साइज मैंने रखा है 20 एंड इस पर्टिकुलर क्लिपबोर्ड का मैंने फॉन्ट रखा है, फॉन्ट फेस रखा है एलिजियर. ओके. इफ मुझे ये सारी फॉर्मेटिंग मैंने जो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे करी डायरेक्टली मुझे किसी अनदर टेक्स्ट पे लगानी है इन वन क्लिक, तो वी विल डू विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर. इंस्टेड ऑफ मैं फिर से हाईलाइट कलर लगा रही हूँ, कलर चेंज कर रही हूँ, साइज कर रही हूँ, फॉन्ट फेस लगा रही हूँ, इतने सारे स्टेप्स करने की बजाय सिर्फ एक क्लिक से ये सेम फॉर्मेटिंग किसी अनदर टेक्स्ट पे लग सकती है with the help of format painter. So let's see if we want to apply same type of formatting which we apply on this text to another text. What we have to do? First select this text. मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है. सो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर. जैसे मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगी, सी माय कर्सर विल चेंज टू लाइक ब्रश टूल. नाउ वी विल सेलेक्ट द टेक्स्ट जिसमें मुझे ये सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है. सपोज मुझे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट जो मैंने लिखा है फॉर्मेट पेंटर, मुझे इस पूरे पे अप्लाई करना है. फॉर्मेट पेंटर एज दिस फॉर्मेटिंग. सो सेलेक्ट दिस टेक्स्ट. सी मुझे मेरा एक ही क्लिक में सारी जो मैंने इसमें फॉर्मेटिंग लगाई थी, लाइक कलर रेड है, हाईलाइट कलर येलो है, साइज 20 है और फॉन्ट फेस मेरा एलिजीरियन है. सो मेरा डायरेक्टली एक ही क्लिक में फॉर्मेट पेंटर सेम फॉर्मेटिंग में अप्लाई हो गया है. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ फॉर्मेट पेंटर. Understood? Then hit the like icon, subscribe it if you are new to my channel, and hit the bell icon for get it notified. Okay? See you guys. See you in the next video. Bye bye.